तो हेलो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम। असल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमारा गेम क्लोज हो गया था ऑटोमेटिकली। तो फाइनली आई हैव कम बैक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फाइनली हम पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे। वहीं से हम एक रोबोट को हैक कर लिए थे। रोबोट को हम एक जो हमारा स्पाइडर बोट है उसको हैक करे थे। उसको हैक करने के बाद उसको कमरे से बाहर लेके आना था। तो चलिए फिर देखते हैं फिर कहाँ से शुरू होता है हमारा सीन। I hope this isn't a bad time, but we need your particular skill set for something. I'm ready. चलिए शुरू करते हैं यहीं से। सर्च फॉर दोबारा हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। फिलहाल तो पता नहीं कहाँ, एक ब्रश के ऊपर है। चलिए तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं कहाँ पे हो। ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास ही में। ये देखिए यहाँ पे हमें आना है। तो फिलहाल कोई ब्रिज के ऊपर है, ओवर ब्रिज है, वहीं के ऊपर है। और सिटी तो बहुत बड़ी है, ये देख लीजिए। ये तो पहुँचते हैं अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले करते हैं जंप। से कोई ले लेते हो गाड़ी। चलो भाई, कर देते हैं गाड़ी को पार्क। Holy shit! Albion's running this station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. I never thought I would say I miss regular police, but now I miss them. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. तो यहीं से फिर निकलते हैं आगे की ओर। बाकी का देख लीजिए, पुलिस स्टेशन।
फाइनली देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे मिशन की ओर। यहाँ तो पूरे स्टेशन में आ चुके हैं। अब वो यहीं से पहला काम कैमरे को करते हैं हैक। ये देखो पुलिस वाला खड़ा खड़ा है, तो नजर न पड़ जाए। सो कैमरे को पहले हैक करते हैं। ये हमारा पहला कैमरा और ये हमारा दूसरा। Mr. Bagley, is this the spider bot we are looking for? According to the serial numbers, this matches the piece of spider bot from the Tone bombing site. Can you see who was using it? Navigate the spider bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Check. तो अब हमें जो है इस रोबोट को वैसे ही हैक करना पड़ेगा। इसको करते हैं। चलो बेटा। That opening right there looks like a good exit point. Right, get comfy. This spider bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. ये डैमेज काफ़ी है। इसी डैमेज एरिया में होते हुए हमें निकलना पड़ेगा इसी कंडीशन में। चलो भाई निकल लेते हैं जल्दी से। देखते हैं भाई क्या है। That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. यहाँ से देखिए दूसरे वाले रूम में हमें जाना पड़ेगा। ऊपर से ऊपर में निकलना पड़ेगा। वही जगह से निकलते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं वो क्या है हमारा। इस वाले को दिया जाए लगता है शीशा लगा हुआ है, चलेगा कैसे?
और यहाँ से सब बंद है, यहाँ से नीचे भी नहीं जा सकते। नीचे से देखते हैं, प्रयास करते हैं। That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. और यहाँ से एक रास्ता नीचे नीचे दिख रहा है, यहाँ से नीचे। चलो भाई खुद जाओ, और कोई सबूत। शीशा लगा है, दिक्कत वाली तस्वीर की बात। Out of the secure room, भाई यहाँ से कहाँ से कोई निकलने वाला यार, ढूंढना तो पड़ेगा भाई, कभी ना कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही होगा। चलो फिर देखते हैं भाई कहाँ से कौन सा रास्ता है। So guys, you can see like that here is a way। ये देखिए यहाँ पे है रास्ता, वो देखिए हमारा दोस्त भूल गया। चलिए फिर
इसके बाद यहीं से ढूंढते हुए निकलने का रास्ता यहीं से अब निकलते हैं। ये देख लीजिए आगे की का रास्ता शायद चलना पड़ेगा, नीचे ना गिर जाए। ओ तो हमारा स्पाइडर टूटा हुआ सारा चल रहा है इसी तरह से। ऊपर जाने का चढ़ेगा से भी आना पड़ेगा। अरे यार क्या मुसीबत है। और इसके अलावा कोई चारा भी बच गए चलो जाना है। Buggery fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening.
Who decided they couldn't be trusted to do their job? Suddenly some corporation can clean up our streets better than the state police have for who knows how long. When crime fighting is treated like a business, crime will never go away. That would be bad for business, right? So don't tell me Albion has our best interests at heart. If the police could handle their job, Albion wouldn't be necessary. But they can't. The tone bombing is a perfect example. A bunch of lazy, overpaid cops are asleep at the wheel. Well, they're not at the wheel anymore, are they? I've been around the block long enough to know what kind of people Albion are. Bloody cowards. They say they're trying to protect us from criminals and they're leaving. Really, they're just afraid someone's going to come along and knock off their iron. Their iron. You're almost there. Make your way through this last vent path. अच्छा, क्या करना है? एक्वायर द स्पाइडर बोट। अच्छा, उसको उठाना है। हम फिलहाल यहाँ पे हैं और हमारा स्पाइडर बोट हमें लेके जाके उठाना पड़ेगा। ये अफसोस जरूर है। Better not fucking aim at me. Stay smart. All units, proceed to alarm location. Acknowledge, over. All clear here. Whatever set off the alarm must be nearby. Whatever set off the alarm is not here. Search over.
Shit. Don't do anything, you'll I surrender. You got me, all right? No, I'll give up. पर है। Don't shoot. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Exact. No, I'll give up. Don't shoot. What's going on? What are you doing? I surrender. Wait. Stop right now. Lower your gun. Heads down! चलो निकलते हैं साथ से ऊपर की ओर क्योंकि बहुत सारी हमारा इंतजार कर रही है। बस सही। चलो यहाँ से क्या निकलना है आगे। Got it. Scanning SpiderBot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Okay, yeah. All units, proceed to alarm location. Sending location on a 1033. Advise conditions. That's an alarm. Search the area. The SpiderBot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Wow. The police really like having secrets. Let's go find this place, Bagley. Pushing you the ground station's coordinates. फाइनली हमने पुलिस स्टेशन से एक स्पाइडर बोट चुरा लिया है। चलिए चलते हैं अब इस वाली लोकेशन पे, फिर देखते हैं यहाँ क्या है भाई माजरा। वहाँ पे आने के लिए ये रहा हमारा मार्ग। ये हमारा मार्ग। चलो भाई Urgent call. Possible hostile at your location. Message received. Moving in. Over. Anyone have visual? Anyone? Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling, and physical training are all valuable. Bare-knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches, or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter. Prove your physical superiority, and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. The GPS history of the SpiderBot we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Ah, it's cold and it stinks. Only good thing to do here is take a piss.
or to discreetly dump a body into the Thames. Terminating Bagley, research. how can I get in? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Me as well, mate, yeah. I know. Yeah. ये हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। क्या करना है इन्वेस्टिगेट? अच्छा, हाँ। First of all, इसका लॉक बटन होगा। Join this box to
Urgent call. Possible hostile at your location. All units, we are after the suspect. चलो फिलहाल पुलिस तो पीछे लग गई, लेकिन काम हमारा ये है। I think we found a super secret police hideout. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. What kind of work was this police doing that led to the town bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? यहाँ पे हमें सब जो है कंप्यूटर पे डाटा चेक करना पड़ेगा, कौन कौन से जगह पे बॉम्ब लगाए गए हैं। Inspector Caitlin Lau, video log. लग जाएगा। Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Albion's bad enough, but working with Clan Kelly is super villain territory. It seems like 0 Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. And what about the missing people? Shit! We have to end this operation. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. फाइनली हमारा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए, हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London-born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal, team. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Shit. Well, the good news is in the country. No one's taking deportees from the UK. The bad news is probably in limbo at the EPC. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside.
फाइनली जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वो वाला मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा वाला मिशन भी देख लीजिए, शो हो रहा है, जैसे लिखा हुआ है मीट द कॉन्टैक्ट एट द EPC, जो हमारा ये अगला वाला मिशन है। तो ये वाला मिशन बस यहीं तक मैं कंप्लीट करता हूँ, आगे वाला मिशन भी कंटिन्यू रहेगा। तो अगर जो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिए अगर जो गेम प्ले हमारा पसंद आता है। अगर जो कोई और भी आप गेम का गेम प्ले देखना चाहते हैं तो आप हमें सिंपली से कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस यही था वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए मिशन के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को